हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड विषय हिंदी के अंतर्गत मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको विलोम शब्द लिखाए थे। आज भी मैं इस वीडियो में आपको विलोम शब्द लिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप अपनी CW की कॉपी पे विलोम शब्द मेरे साथ लिखेंगे। एक तरफ शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? विलोम शब्द लिखेंगे। तो शब्द में मैंने लिखा है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। फिर बच्चों, अगला शब्द है कीर्ति और कीर्ति का विलोम शब्द होता है अपकीर्ति। इसके बाद बच्चों शब्द है खल और खल शब्द का विलोम शब्द होता है सज्जन। इसके बाद शब्द दिया हुआ है गुरु और गुरु शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों लघु। आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है घृणा और घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। फिर शब्द दिया हुआ है बच्चों जय और जय का विलोम शब्द होता है पराजय। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों जीवन और जीवन शब्द का विलोम शब्द होता है मरण। इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है जंगम और जंगम शब्द का विलोम शब्द होता है स्थावर। इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है तामसिक और तामसिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सात्विक। सात्विक। फिर इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है त्यागी और त्यागी का विलोम शब्द होता है स्वार्थी। बच्चों अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द दिया हुआ है क्रय। तो क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय। फिर शब्द दिया हुआ है खंडन और खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। अगला शब्द है बच्चों गहरा और गहरा शब्द का विलोम होता है उथला। उथला। अगला शब्द दिया हुआ है गुप्त और गुप्त शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों प्रकट। प्रकट। अगला शब्द है गोचर और गोचर का विलोम शब्द होता है अगोचर। अगला शब्द दिया हुआ है चढ़ाओ और चढ़ाओ शब्द का विलोम शब्द होता है उतार। इसके बाद बच्चों शब्द जो दिया है वो शब्द है ज्वार और ज्वार शब्द का विलोम शब्द होता है भाटा। फिर बच्चों शब्द दिया हुआ है तीक्ष्ण और तीक्ष्ण शब्द का विलोम होता है कुंद। तीक्ष्ण का बच्चों विलोम आप मंद भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है तरुण और तरुण शब्द का विलोम होता है बच्चों वृद्ध। इसके उपरांत बच्चों शब्द दिया है दानी और दानी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृपण। फिर शब्द दिया है दाता और दाता का विलोम शब्द होता है याचक। अगले शब्द पर आते हैं देव और देव का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दानव। इसके बाद बच्चों देखिए शब्द दिया है नाश। नाश का विलोम शब्द होता है निर्माण। इसी तरह बच्चों शब्द दिया है नित्य। नित्य का विलोम होता है अनित्य। इसके बाद दिया है शब्द निर्मल और निर्मल शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों मलिन। अगला शब्द है निषेध और निषेध का विलोम शब्द होता है बच्चों विधि। फिर शब्द दिया है पक्ष और पक्ष शब्द का विलोम होता है विपक्ष। इसके बाद बच्चों शब्द दिया है स्वतंत्र और स्वतंत्र शब्द का परतंत्र और परतंत्र शब्द का विलोम होता है स्वतंत्र। इसके उपरांत बच्चों जो शब्द है वो है परिश्रम और परिश्रम का विलोम शब्द होता है आलस्य। आलस्य। अगला शब्द है नश्वर और नश्वर शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों शाश्वत।
शाश्वत। फिर शब्द दिया है निरक्षर, और निरक्षर शब्द का विलोम होता है बच्चों साक्षर। फिर शब्द दिया है निंद्य, निंद्य का होता है वंद्य, वंद्य। अगला शब्द दिया हुआ है पुरस्कृत, और पुरस्कृत शब्द का बच्चों विलोम होता है दंडित, दंडित। अगला शब्द है प्रख्यात, और प्रख्यात का विलोम होता है कुख्यात, कुख्यात। बच्चों इसके बाद प्रलय, प्रलय शब्द का विलोम होता है सृष्टि। इसके बाद बच्चों अगला शब्द दिया है पालक, और पालक शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संहारक, संहारक। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों निंदा, और निंदा शब्द का विलोम शब्द होता है प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। अगला शब्द दिया हुआ है नूतन, और नूतन शब्द का विलोम शब्द होगा बच्चों प्राचीन। अगला शब्द दिया हुआ है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है बच्चों निवृत्ति, निवृत्ति। इसके बाद बच्चों शब्द दिया है दुर्लभ, और दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द होता है सुलभ। इसके बाद बच्चों शब्द दिया हुआ है धृष्ट, और धृष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है विनीत। अगला शब्द बच्चों दिया है नास्तिक, और नास्तिक शब्द का विलोम होता है आस्तिक। इसके उपरांत बच्चों शब्द दिया हुआ है निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सचेष्ट। फिर शब्द दिया हुआ है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। बच्चों इसे आप परोक्ष भी लिख सकते हो। फिर शब्द दिया हुआ है प्राचीन, और प्राचीन शब्द का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। इसके उपरांत बच्चों शब्द दिया है बंधन, तो बंधन का होगा विलोम शब्द मुक्ति। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों बाह, बाह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभ्यांतर, अभ्यांतर। अगला शब्द दिया हुआ है यथार्थ, और यथार्थ शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों कल्पित। इसके उपरांत शब्द दिया हुआ है रक्षक, और रक्षक शब्द का विलोम होता है बच्चों भक्षक। फिर शब्द दिया है वक्र, और वक्र शब्द का बच्चों विलोम होता है ऋजु। अगला शब्द दिया हुआ है भूगोल, और भूगोल शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों खगोल। फिर शब्द दिया हुआ है भौतिक, और भौतिक शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों आध्यात्मिक। इसके बाद शब्द दिया हुआ है बच्चों वसंत, और वसंत का तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है विलोम शब्द पतझड़। फिर शब्द दिया हुआ है विशाल, और विशाल शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों क्षुद्र। फिर दिया हुआ है शब्द शुष्क, और शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला। अगला शब्द दिया हुआ है मूक, और मूक शब्द का बच्चों विलोम होता है वाचाल। इसके उपरांत शब्द दिया हुआ है वृद्धि, और वृद्धि का विलोम शब्द होता है ह्रास। फिर दिया हुआ है शोषण, और शोषण शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों पोषण। आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द दिया हुआ है सत्कार, और सत्कार शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों तिरस्कार, तिरस्कार। इसके उपरांत बच्चों दिया है शब्द स्वार्थ, और स्वार्थ का होता है परमार्थ। स्वार्थ का विलोम क्या होता है बच्चों परमार्थ।
अगला शब्द दिया हुआ है शुक्ल, और शुक्ल का विलोम होता है बच्चों कृष्ण। फिर दिया हुआ है सरल, और सरल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वक्र या कुटिल, वक्र या कुटिल। और इसका एक विलोम और होता है बच्चों तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा। फिर आते हैं अगला शब्द है संकीर्ण, और संकीर्ण शब्द का विलोम होता है बच्चों विस्तीर्ण। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों समास, और समास का विलोम शब्द होता है व्यास। फिर शब्द दिया हुआ है शीतल, और शीतल शब्द का विलोम शब्द होता है उष्ण। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों ससीम, और ससीम का विलोम शब्द होगा असीम। फिर अगले शब्द पर आते हैं बच्चों, कौन सा शब्द दिया हुआ है संधि, और संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। अगले शब्द पर आते हैं, शब्द लिखा हुआ है हास्य, और हास्य शब्द का विलोम होता है रुदन। फिर शब्द दिया हुआ है सृष्टि, और सृष्टि का विलोम होता है बच्चों प्रलय। अगला शब्द दिया हुआ है श्रव्य, और श्रव्य शब्द का विलोम होता है दृश्य। फिर शब्द दिया हुआ है सक्रिय, और सक्रिय शब्द का विलोम होता है बच्चों निष्क्रिय। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों संध्या, और संध्या का विलोम होता है प्रातः। बच्चों इन विलोम शब्दों को आप एक बार पुनः देख लें ताकि आप स्पष्ट तरीके से अपनी कॉपी पे इसे लिख सकें। शब्द है प्रलय, प्रलय का विलोम सृष्टि। पालक का संहारक, निंदा का क्या होगा प्रशंसा, नूतन का प्राचीन। फिर शब्द दिया हुआ है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निर्वृत्ति। फिर इसके बाद दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। धृष्ट का विनीत, नास्तिक का आस्तिक, निश्चेष्ट का सचेष्ट। प्रत्यक्ष का क्या होता है अप्रत्यक्ष, चाहे आप परोक्ष लिखते हैं। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। फिर बंधन का मुक्ति, बाह्य का अभ्यंतर, यथार्थ का क्या होता है कल्पित। फिर रक्षक का भक्षक, वक्र का विलोम होता है ऋजु। फिर भूगोल का खगोल, भौतिक शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों आध्यात्मिक। वसंत का क्या होता है पतझड़। विशाल का क्षुद्र, शुष्क का आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है बच्चों गीला। फिर शब्द दिया है मूक, और मूक शब्द का विलोम शब्द होता है वाचाल। फिर इसके बाद शब्द दिया है वृद्धि, और वृद्धि शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों ह्रास। फिर कौन सा शब्द दिया हुआ है शोषण, और शोषण शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों पोषण। फिर आते हैं सत्कार, सत्कार का विलोम तिरस्कार। स्वार्थ का क्या होता है परमार्थ। शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है श्वेत, तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला, तो शुक्ल का विलोम क्या होगा कृष्ण। सरल का क्या होगा वक्र या कुटिल, यह एक शब्द मैंने और बताया था आपको तिर्यक। फिर संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द होता है बच्चों विस्तीर्ण। समास का व्यास। शीतल का क्या होता है उष्ण। ससीम का असीम। संधि का होता है विलोम शब्द विग्रह। हास्य का रुदन। सृष्टि का प्रलय। श्रव्य का दृश्य। सक्रिय का निष्क्रिय, और संध्या का विलोम शब्द होता है प्रातः। बच्चों यहीं से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, और बच्चों 9 जून से लेकर 25 जून तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस संचालित नहीं होंगी, आपकी छुट्टियां रहेंगी। आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा, उस हॉलीडे होमवर्क को आपको अपनी HW की कॉपी में बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। तो एंजॉय योर हॉलीडेज, हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. Students, today I am continue active passive voice, and today I will tell you some rules regarding present continuous and
past continuous tense. And future continuous tense is usually not in passive voice. That means we don't make passive voice of future continuous tense. So let us try to understand it. Students, you know, present continuous means which is running. Continuous means running. Present continuous which is running in the present. And past continuous that was running in the past. Okay? In present continuous tense, active voice structure is subject, then helping verb is are, am, plus third form VING. Is, are, am, these are helping verbs, plus VING, that means we add ing to the first form of the verb, plus object, then OW. Okay, OW means other words. This is the structure in present continuous tense in affirmative sentences. And if sentence is in negative, we add not. Subject is am plus not. Okay. And in passive voice, we write firstly object. First of all, we have to write object, then helping verb is am according to object, then being, then third form of the verb plus by agent. Students, all the rules in passive voice are common. Only there is change of helping verb. In all the continuous tenses in passive voice, we use being after the helping verb. In present continuous, is, are, am, being. Past continuous, was, were plus being. So it is very simple to learn the rules. Okay? In past continuous, was, were, helping verb, ing, same. Passive voice subject was, were plus being. So there is a similarity. Only you have to keep in your mind the use of helping verb. Present continuous it is, are, am. And past continuous the helping verbs are was, were. Okay, and other things are common. So let us try some examples. They are painting a very nice portrait. Students, here they subject, object, a very nice portrait. So write here object, a very nice portrait, then helping verb, it is according to object and object is singular. A very nice portrait is, then being. Is being, then third form of the verb, painted. Okay? A very nice portrait is being painted by, you have to write agent, and agent here is they. It will become them. Okay? So, it is a very nice portrait is being painted by them. Now next example, some boys were disturbing the whole class. Students, here some boys is subject and the whole class that is object. Okay, and this sentence is given in past continuous because there is a helping verb. Okay, now write the object, the whole class. The whole class. Now helping verb according to object. Now the whole class was, then being. Now third form of the verb that will become disturbed. The whole class was being disturbed by, you have to write agent which will become as object, some boys. By some boys. Okay. Now next one. Example. The boy was
not gazing at me. Here the boy is subject and object is me. This is also past continuous tense. So write object me, it will become I. Okay, and according to I we will use helping verb was. I was being gazed at. Okay, third form of the verb. Gaze, gazed, and there is preposition at after this verb. I was being gazed at by the boys, by the boy. Okay, that's it. Now let us practice some more examples. Okay, we will practice some more examples regarding these tenses. Now see some more examples. Students, next third, fourth number sentence. The woodcutter was not cutting a tree in the forest. Okay, here in this sentence, this is past continuous. The subject is the woodcutter and object a tree. Okay, so write the object first of all. A tree. This is past continuous was, then being, a tree was being cut. Okay. Next, by agent, that means by the woodcutter. A tree was being cut by the woodcutter in the forest, that is OW. OW means other words. You can write other words before the woodcutter. Now let us see some more examples. Interrogative. Are you teasing a hungry dog? Okay, this is interrogative sentence and present continuous tense. Students, there is helping verb written before the subject. In interrogative sentences, there is usually helping verb before subject. Here you is subject, object a hungry dog. Then in passive voice we will use helping verb according to a hungry dog, and it is singular. That's why we will use here is a hungry dog. Now being, then third form of the verb, that is teasing, teased, being teased. Okay, is a hungry dog being teased by the subject, that is you remains you. Okay, now next example. Let us see some more examples. Were the naughty boys plucking the flowers? Okay,
this is also past continuous tense, and this sentence is given interrogative. Here, where is the helping verb? The naughty boys is subject, and the flowers that is object. So you have to write flowers, okay, as object, and according to flowers we will use verb. The flowers were the flowers, then you have to write being, were the flowers being, then third form of the verb plucking, plucked. Okay, were the flowers being plucked by the naughty boys. Okay, you understand well? Question mark. Now let us see next example, WH type sentences. I will teach you some examples WH type which start with question words like what, who, whom, why, where, when, etc. Okay, so let us see. What are you eating? Right now. आप इस समय क्या खा रहे हैं? Here what is question word and it is also doing the work of an object, so it will remain as it is. What, and it is usually singular. What is, okay, what, that is object, and what is always used as singular object. What is being, now third form of the verb eaten. What is being eaten? Right now. By, then you have to write present you will remain you. Okay, now let us see some more examples. Okay students, any problem? If you have any queries, problem, you may ask me in WhatsApp group. Okay, let us see some more examples. Who, 8 number. Who was breaking your heart? Okay, this is past continuous tense. It is started with who that is acting as a subject. So you can change it in passive who is converted into by who. By whom and taken as singular. By whom was your, that is object, your heart. Okay, by whom was your heart being broken? Third form of the verb. Okay, question mark. You can also change this sentence like this. How? Who will remain as it is. Who was, okay? Who was your heart? Your heart broken, and then by. This is also correct. You can change either like this. By whom was your heart being broken? Either who was your heart being broken by. Okay, being broken by. Okay students, now see next example 9. How was this film
made. Okay, how was this film made? So you have to write question word how as it is. How this film, that is object. How was this? Sorry. This is given in passive voice. That's wrong sentence. I will write again. How was he making this film? Okay, this is past continuous tense. Now, what you have to write? How, then was. According to this film, how was this film? Then being, then third form of the verb made by he, it will become him. Now question mark. Okay students, today's class is over. Now in my later videos I will provide some examples regarding imperative sentences and some special rules. There are many special rules regarding this. These were the simple sentences, that doesn't matter, but you should keep in your mind that you are well versed in special sentences also. Then okay, thank you for attending today's class. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. I am A.K. Dwivedi, your English teacher. Students, I think you must have prepared everything well. Now students, from 10th June to 25th June, your holidays are going to start, and at 9th June it will be your last lecture. Okay, so revise everything whatever has been taught to you properly for the test, and your first unit test are commencing in June. Date will be given to you very soon. Students, those who have not completed their homework, that means in notebook, English literature as well as English grammar, may collect the PDF, that means hard copy, printed copy of notes from the school, and you have to prepare everything from those notes which you are given from the school. Okay, if there is something difference from those which you have written in your notes earlier, okay, so don't worry, but leave them as they are. You have to prepare everything whatever you are getting from the notes. Okay, you will be given very shortly, and for collecting the notes you have to come to school and then collect them and prepare everything well. Okay, thank you very much for attending the class till now. And students, those who have not have their registration, you are requested to get your registration, otherwise you may not have a chance to get it. Okay, thank you. Hello students, welcome back to the online classes of SGUI. Myself Prachi Trivedi, your maths teacher. Students, today we will start the chapter. We will continue the chapter algebraic identities and expansion. Okay. Now we solve some miscellaneous question of this chapter. The first question is 0.76 into 0.76 into 0.76 plus 0.24 into 0.24 into 0.24 upon 0.76 into 0.76 minus 0.76 into 0.24 plus 0.24 into 0.24. Okay. Now let's see the solution.
Firstly, we let x is equals to 0.76 and y is equals to 0.24. Okay, then the question becomes 0.76. We can write this equation in the form of 0.76 whole cube plus 0.24 whole cube. Okay, upon 0.76 whole of square minus 0.76 into 0.24 plus 0.24 whole of square. Okay, now put the value. It become x cube minus y cube upon x square minus xy plus y square. Okay, now we know that the identity, the value of x cube minus y cube is equals to x cube plus y cube is equals to x plus y bracket x square minus xy plus y square. Okay, we use this identity in the question, then the equation become x plus y into x square minus xy plus y square upon x square minus xy plus y square. Okay, when we solve it, we get x plus y. Put the value of x and y from equation number 1, 0.76 plus 0.24. 4 plus 6 is 10. 8 plus 2, 10. Okay. Now the answer is 1.0. Okay. Now let's see the second question. M plus n upon 7 whole cube into m minus n upon 7. We can write this equation in the form of m plus n upon 7 whole of square into m plus n upon 7 into m minus n upon 7. Okay. Now student, here we use the identity a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. Okay. M plus n upon 7 whole of square. The value of a is m and b is n upon 7. Then it become m square minus n upon 7 whole of square. Okay. Then the answer is m plus n upon 7 whole of square n square minus n square upon 49. Okay. The next question is x minus 1 upon x, x plus 1 upon x, x square plus 1 upon x, x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4. Let's see the solutions. Here we use the identity a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. Okay. This is a minus b and this is a plus b. It becomes x square minus 1 upon x whole of square. Okay. We can write 1 upon x whole of square is equals to 1 upon x square. Again we use the identity a minus b, a plus b. The value of a is x square and the value of b is 1 upon
x square. Then it become x square whole of square. A square minus b square means x 1 upon x square whole of square. Okay. X square raised to square, it become x raised to 4 minus 1 upon x raised to 4. Again we use the identity a minus b, a plus b. The value of a is x raised to 4 and b is 1 upon x raised to 4. A square minus 1 upon a square. Okay. And the answer is a raised to 8 minus 1 upon x raised to 8. The answer is x raised to 8 minus 1 upon x raised to 8. The next question is, if 4x square plus y square is equals to 8 and xy is equals to b, then find the value of 2x plus y. Okay. 2x plus y. The whole square of 2x plus y is a square. We use the identity a plus b whole of square, which is a square plus b square plus 2ab. Okay. A square means 2x square plus b square means y square plus 2ab. 2 into 2x into y. Okay. Then 4x square plus y square plus 2 2s are 4 x y. Okay. Now put the value of 4x square plus y square is equals to a and xy is equals to b from the question. The value is a plus 4, xy is b. Then the answer a plus 4b. Okay. Now when we remove square sign, the equation become 2x plus y. 2x plus y is equals to under root a plus 4b. This is the answer of the question. The next question is, simplify x upon 2 minus 2 upon 5. 2 upon 5 minus x upon 2 minus x square plus 2x. Okay. Now student, in this question firstly we take common minus sign. Okay. Then it become x minus 2 upon 5. When we take minus sign common, then this minus x by 2 become plus x by 2 and plus 2 by 5 become minus 2 by 5. Okay. Now students, multiply this, we get x upon 2 minus 2 by 5 whole of square minus x square plus 2 square. Here we use the identity a minus b whole of square. We get a square plus b square minus 2ab minus x square plus 2x. Okay. Now x raised to 4, x square upon 4 plus 4 upon 25 minus 2x upon 5 minus x square plus 2x. When we open the bracket, the sign will be changed and become minus x square upon 4 minus 4 upon 25 plus 2x upon 5 minus x square plus 2x. Now solve. We know that we solve the like terms. Okay. Then this is x square and the term of x square this. Okay. When we add this, LCM is 4 x square and x square minus 4x square minus x square minus 4x square. Similarly we solve plus 2x upon 5 plus 2x. Here we take the LCM 5.
Okay, then it become 2x plus 10x and minus 4 by 25, right, as it is. Then minus x square minus 4x square, when we add it, it become minus 5x square upon 4 plus 5 plus 2, 12x upon 5 minus 4 upon 25. Okay, students, now we can write it minus 4 upon x square plus 12. The next question is, if x square plus 1 upon x square is equals to 11, and then find the value of 7x cube plus 8x minus 7 upon x cube minus 8 upon x cube. Okay, now let's see the solution. 7x cube plus 8x minus 7 upon x cube minus 8 upon x. Okay, we write this equation 7x cube minus 7 upon x cube plus 8x minus 8 upon x. Okay, here we take the common 7, then it becomes 7 bracket x cube minus 1 upon x cube. Okay, plus here we take common 8, then it becomes 8 bracket x minus 1 upon x. Okay, this is equation number 1. Now from the question we have x square plus 1 upon x square is equals to 11. Okay, then adding 2 on both sides, subtracting 2 on both sides. Equation become x cube plus 1 upon x square minus 2, here 11 minus 2. Okay, we can write 2 into x square into 1 upon x square. Then this equation become x minus 1 upon x whole of square. A square plus b square minus 2ab, and 11 minus 2 is 9. Then the value of x minus 1 upon x is equals to under root 9 is 3. Okay, now x minus 1 upon x is equals to 3, then cubing on both sides, it become x minus 1 upon x whole of cube 3 cube. Here we use the identity a minus b whole cube, which is a cube minus b cube minus 3ab bracket x minus x. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Then x cube minus 1 upon x cube minus 3, from the equation number 2. The value of x minus 1 upon x is 3. Okay, is equals to 27. 3 3s are 9. Then x cube minus 1 upon x cube is equals to 27 plus 9. Then x cube minus 1 upon x cube is equals to 36. Equation number 3. Okay, now put the value of x minus 1 upon x and x cube minus 1 upon x cube in equation number 1. We get 7 into 36 plus 8 into 3. Okay, now solve it. 242. When we multiply 7 into 36, we get 252 plus 8 3s are 32, 24,
4 plus 2 is 6, 5 plus 2 is 7 and 2. And the answer is 276. Okay. The next question is, if the sum of two number is 5 and the sum of their cube is 35, then find the sum of their square. Okay. Let's see the solution. Let the two numbers x and y. Okay. Given that the sum of two number is 5, means x plus y is equals to 5, and the sum of their cube means x cube plus y cube is equals to 125. Then find the square of, then means find x plus y square. Okay. Now we know that x plus y, we cube, it become x plus y whole of cube is equals to 5 cube. Here we use the identity a cube plus a plus b whole of cube, which is a x cube plus y cube plus 3xy plus x plus y is equals to 5 cube is 125. Okay. Now put the value of x cube plus y cube is equals to 125 plus 3xy, and the value of x plus y is 5. Okay. 125. 5 3s are 15. Then 15xy is equals to 125. The value of x cube plus y cube is 35. This is 35. Okay. 125 minus 35. Then 15xy is equals to 0, 9. Then xy is equals to 90 upon 15. Then xy is equals to 6. Xy is equals to 6. Okay. Now again, x plus y is equals to 5. This is equation number 1. X plus y is equals to 5. When we square it, x plus y whole of square, then it becomes x square plus y square plus 2xy is equals to 25. Now put the value of xy from equation number 1, which is 6. X square plus y square plus 2 into 6 is equals to 25. Then x square plus y square is equals to 25 minus 12. Then x square plus y square is equals to 30. Okay. Then the answer is 30. Okay students, this is the last class of the chapter expansion, and from tomorrow your vacations will be started. After that, school conduct your unit test. Then revise your syllabus of unit test. Enjoy your vacation. Study hard. Thank you so much. Good morning students. Student, in our today's video lecture, as I yesterday studied to you the inertia, types of inertia, and inertia of rest, in which inertia of rest we have studied inertia of direction, inertia of motion, and in today's lecture we are going to just start the momentum, and in which we are going to study the linear momentum, because momentum is also angular momentum, which you have studied in the class 11th. So here in your syllabus only you have linear momentum, because we have discussed only the motion in a straight line, so that's why there is a linear momentum. And linear momentum, it is the product of
is the product of mass of the object, mass of the object, mass of the object to the velocity of the object, to the velocity of the object. So by this definition we can mathematically define linear momentum, and it is represented by, student, it is represented by the symbol, represented by the symbol small p. It is represented by the symbol small p, and by this definition we can say small p is equal to small m into v. Here m is what? Mass, and v is velocity. So you are seeing here that this is the product of mass and velocity, and this is the linear momentum here. And students, it is a vector quantity, because we know that velocity here is vector quantity and mass is scalar quantity, and finally this is a vector quantity. It is a vector quantity. This is the vector quantity, and the direction of this is depends on the direction of the velocity. So same as direction of the velocity, direction of the linear momentum. From this formula we can also find the unit of this linear momentum. So we are going to find it, capital P unit. Here you know that in SI system mass is represented by kg, so I am writing here kg, and for velocity we know that it is meter per second. It is meter per second, and we can also write it as meter, kg meter, and when we shift this term in the numerator, it would become second to the power minus 1. So this is the unit of linear momentum, kg meter second minus 1. Here you can say kg meter upon per second. So I think this is the linear momentum, and you are seeing here, student, that it is depending on the mass and velocity. So if the mass of the object is very large, if the mass of the object is very large and it is moving, so it would have a large linear momentum. And if you want to increase the linear momentum, you have to velocity, you have to increase the velocity of the object. Or if the object is very heavy, so it has a large momentum. So momentum is depending on mass as well as velocity, you are seeing here. So now we are going to start. Suppose I am giving you an example. Suppose we have a car and we have a train, and both are moving with the same velocity. We have a car and a train, and both are moving with the same velocity. Both are moving with the same velocity. Both are moving with the same velocity. So you have to find that in both of them which have large momentum. So as we know that momentum is what? It is mass into velocity. And here you are seeing that the velocity is constant for both car and train. So momentum is it means we have maintaining the velocity is constant. So it means this is a constant value, and when we eliminate this constant, we know that we have to put this proportionality sign here. It means momentum is depending on directly on proportional to mass. So here you can say in both of them which have the greater mass, that object would have the greater linear momentum here. And as you are seeing there that the train has the greater mass than the car, so it means the train has larger momentum. So train momentum would be greater than the car momentum. It would be greater than the car momentum. So because the mass of the train is larger than the mass of the car. So this is our example, so you can better understand this linear momentum topic here. Now we are going to find the rate of change of momentum. What is the rate of change of momentum? What is the rate of change of momentum? So I am writing it here, rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Rate of change of, student, just keep one point, notice that this is a rate. Whenever you see this term rate here, you have to just find the quantity with respect to time interval. So change of momentum means when we apply, suppose our object is moving with velocity u. So initial velocity
initial velocity of the object let's say is small u. I am representing initial velocity as I already mentioned this by small u in the previous equations of motion for uniformly accelerated motion as we have studied. So here you are seeing that initial velocity of the object I have represented by the small u quantity. Now suppose we have applied a force. So by applying a force, their velocity changes and it would become, so final velocity after applying the force, final velocity of the object let's say it is represented by small u. So velocity changes from u to v by applying a force. Now what is the change of momentum? You are seeing here we have to find rate of change of momentum. So first of all we have to find change of momentum. So I am going to find initial momentum first. Initial momentum. So initial momentum is what? It is mass into initial velocity. Because in both the cases, when the object is moving with velocity u, when we applied the force, mass of the object doesn't change. So initial momentum is what? Mass into initial velocity. That is small u. You are seeing here it is represented by small u. So this is the mass into velocity small u. Now final momentum is what? Final momentum is equal to mass into final velocity. What is final velocity? V, small v. This is u, this is small v. Now we have to find change of momentum. And as I told you students always that whenever we have to find the change of any physical quantity, we have to subtract the final value minus initial value. You have to just understood this concept very well, that for finding the change of momentum and change of any physical quantity, we have to just subtract the final value minus initial value. So here final momentum minus initial momentum. So what is final? And the change of momentum, this term mathematically is represented by this term delta, and momentum is small p. So this is mathematically representation of this change of momentum. So I am writing it as delta p equal to what? Final momentum. Here you are seeing that this is m into small v minus what is the initial momentum? Initial momentum m into initial velocity, that is small u. So this is our change of momentum. Here you can take common small m, so it would become m bracket v minus u. So this is delta p value. Now finally we have to find the rate of change of momentum, because we have found rate change of momentum, and for rate we have to just divide the time interval. For rate. So we have taken that the time is small t. During which the velocity of the object becomes from u to v. This is the time interval in which the object changes its velocity and its velocity becomes small v in the time interval small t. So what is the rate of change of momentum? Delta p, and the time is here small t. So put the value m v minus u upon t. So this is rate of change of momentum, delta p by t, m v minus u upon t. And you are seeing here v minus u upon t is what? Student, v minus u is change in velocity. Delta v, we can say delta v, because this is the final velocity, this is the initial velocity. So final velocity minus initial velocity, final value minus initial value is what? It is always change. So this is change in velocity and this is time. What is change in velocity with respect to time? You have already studied in the chapter motion. This is the change in velocity upon time. This is acceleration. This is nothing but acceleration. So I am putting this as a, small a. So what we have got, it is a very important result for numerical as well as for next topic, which is Newton's second law. So we have found delta p upon t, that is rate of change of momentum, is equal to mass into acceleration. Is equal to what? We have got mass into acceleration, and we would talk about the importance of this relation in the next video lecture. But from today's, we have to stop with this video lecture. We are going to stop, and your summer vacation is going to start from 10 June to 25 June. So this is your last video lecture, students, and we would continue from here. So this is your
summer vacation, and student, you have to completed all your work which I have studied in your classwork copy, because your copy would be submitted in the school campus. So thanking you. We would meet again. Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Bhatti. Student, in previous lecture I have to complete the chapter, and today I am going to explain some practice problem based on this chapter. Okay. So here question number 1 is classify the following reaction. Means in these reaction you must be classified which type of reaction is this one. Yes, first one is the zinc solid plus H2SO4 aqueous to give ZnSO4 aqueous plus hydrogen gas. So in this reaction, displacement of hydrogen gas takes place. Due to strong metal like zinc displaces the hydrogen gas from diamond acid. So this one is a chemical displacement reaction. Chemical displacement reaction. Okay. Now next reaction is the barium chloride aqueous react with Na2SO4 aqueous to get BaSO4 aqueous plus 2 NaCl aqueous. In this reaction, barium replaces the sodium metal due to strong activity nature. So in this reaction, both the ion present in both electrolyte are displaced to each and other. So this one is a double displacement reaction. This one is the double displacement reaction. Displacement reaction. Now next reaction. Carbon monoxide gas react with oxygen gas to form carbon dioxide gas. So this one is the direct combination reaction. Direct combination reaction. Now next, potassium nitrate solid to get potassium nitrite liquid and oxygen gas upon strong heating to get, this one is a decomposition reaction, breaking of compound. Decomposition reaction. Now here, next number, iron solid react with steam of water to form Fe2O3 and hydrogen gas. First of all, this one is a reversible reaction, and here iron changes to Fe2O3 and hydrogen changes to hydrogen gas. Hydrogen in water changes to hydrogen gas. So here iron accepts oxygen while hydrogen releases oxygen. So this one is also a redox reaction. So this one is a type of reversible redox reaction. Now next one is the water upon electric current to decompose into hydrogen gas and oxygen gas. This one is an electrochemical reaction. This one is the electrochemical reaction. Now next one is the potassium chlorate to KClO3 in presence of amino2 catalyst upon
on heating to get 2 HCl and 3 O2. Here due to presence of catalyst, so this one is a catalytic reaction. This one is the catalytic reaction. Okay. Now last one is the hydrogen gas react with chlorine gas in presence of sunlight to gives HCl. HCl presence and sunlight presence is the photochemical reaction. This one is the photochemical reaction. Here the some example and types of these example explain. So student, this is the last topic of this chapter and revision of this chapter. And during the summer vacation, you must be revise all the things and all the definition with some suitable example. This is all about today, and best of luck for the summer vacation. Okay, over and out. Hello everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. As you all know that we are discussing lessons and tissues, and today I am going to tell you about fourth type of animal tissue, which is nervous tissues. I already told you about three types of
हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। ये क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योग्राफिक ग्रिड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, जिसमें मैंने आपको ग्रिड, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स के यूजेस, उनके क्या किस तरीके से लैटिट्यूड्स जो है वो हमको किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हेल्प करती है, और लॉन्जिट्यूड से हम लोग पूरे टाइम जोन्स को कवर करते हैं, जिसमें मैंने आपको आइडियल, जिसमें इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी के साथ साथ ग्रीनविच मीन टाइम, इसी के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंने ये सारी चीजें आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर करी हैं। और मैंने आपको उससे रिलेटेड, उस टाइम जोन से रिलेटेड मैंने कई सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियर करे। आज इसमें 4 इंपॉर्टेंट कुछ जो है वो डायग्राम्स हैं, जिन्हें मैं आज आपको जो है बताने जा रही हूँ। ये मैंने आपको पीडीएफ में भी सेंड किए हैं, ताकि इनको पीडीएफ से देखकर आप इजिली अपनी कॉपीज में भी ड्रॉ करें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। फिलहाल मैं इनको आज आपको बोर्ड में भी क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट मैंने लिखा हेमिस्फीयर्स। देखिए हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हेमिस्फीयर हम जानेंगे। इस तरीके से हम लोग ने एक सर्कल बनाया, दिस, यू ऑल नो दिस इज इक्वेटर। 0 डिग्री पे होता है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, क्लियर। एंड दिस प्राइम मेरिडियन, ये भी 0 डिग्री पे होती है, और इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इस तरीके से जो हमारा ग्लोब है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए हमें पढ़ना है हेमिस्फीयर। देयर आर 4 हेमिस्फीयर, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ओके, हेमिस्फीयर्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नदर्न हेमिस्फीयर। एक चीज और यहाँ पर समझ लो, ये पोल्स है, ये हमेशा ध्यान रखो। दीज आर पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। और जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आपको पता चल रहा है कि ये हमारा नदर्न है। हम हमेशा से मेन चीज हमारी, मैंने बार बार बताया कि डायरेक्शंस को हमेशा ध्यान रखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जैसे कि हमें ये पता है कि हमारी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड में हम ईस्ट करते हैं, इसमें वेस्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा हेमिस्फीयर जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारी इक्वेटर लैटिट्यूड है, उसके जो ऊपर का पोर्शन होगा वो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर होगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन, तो दैट इज द नदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। और जो हमारा इक्वेटर के नीचे का पोर्शन है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर हो गया। अब देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब हमने आपको बताया कि इस साइड में हमारा देखिए ईस्ट है ये, तो मेरा हमारा जो ये प्राइम मेरिडियन, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है इस साइड का, दैट इज द, ये जो हमारा हाफ है, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा हाफ है ये दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये देखिए प्राइम मेरिडियन से जो हमारा ये वाला हाफ है दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से हमारा जो ग्लोब है वो 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं, तो जब भी उसको इंडिकेट किया जाता है तो हमेशा इस तरीके से किया जाता है कि जैसे 73 डिग्री नॉर्थ या 44 डिग्री साउथ, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साउथ हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में है। तो ये इंडिकेट करने के लिए हमको हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें। हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं। द सेकेंड इज अर्थ ग्रिड। अब देखिए ग्रिड, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ग्रिड बताई थी, फिर से मैं क्लियर करूंगी। देखिए अर्थ ग्रिड क्या होती है। ग्रिड जो होती है वो रनिंग लाइन्स होती है, दे आर रनिंग थ्रू ईस्ट टू वेस्ट, east to west running lines are called latitudes and north to south running lines are called longitudes. They all are the imaginary lines. तो इसमें भी देखिए सबसे पहले ये आपके पोल्स हो गए दोनों, ठीक है, और ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन और ये हमारा हो गया इक्वेटर। और देखिए अब सबसे पहले लैटिट्यूड्स,
क्योंकि ग्रिड के लिए हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दोनों चाहिए होते हैं। तो उसमें देखिए लैटिट्यूड्स में हम लोग इस तरीके से जो हमारी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये हमारी जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं ये जो होती हैं, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए दीज ऑल आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स में जो ये देखिए पैरेलल्स होती हैं, इसके सर्कल्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, बट ये जो होती है ये जब टूवर्ड्स टू पोल्स या तो साउथ पोल या नॉर्थ पोल जाती है तो ये डिक्रीज होती चली जाती है लाइक दैट। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बीच से जो है इंक्रीज होती है बीच में, और पोल्स की तरफ आते आते ये डिक्रीज होने लगती है। इसी तरीके से इस तरफ भी हम बनाएंगे। ये हमारा जो क्रिस क्रॉस हमारा फ्रेमवर्क बन रहा है, दिस क्रिस क्रॉस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड ग्रिड। इसको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। इट इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये क्रिस क्रॉस हमारा फ्रेमवर्क हो गया लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का। ये हमारा हो गया अर्थ्स ग्रिड। क्लियर हो गया। थर्ड इज 5 मेन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हमारे कौन से मेन 5 लैटिट्यूड्स के पैरेलल्स हैं? देखिए सबसे पहले, अब इसको हम थर्ड डायग्राम से समझेंगे। हमारे जो मेन पैरेलल्स हैं, सबसे हमारा मेन जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। मैं बहुत बार बताई हूं मैं, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। ये पोल्स हो गए हमारे, और इसके बाद जो हमारा एक लैटिट्यूड है दिस, ये हमारा 23 1.5 डिग्री पे नॉर्थ में है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये हमारा 66 1.5 डिग्री पे है, 66 1.5 डिग्री, इट इज आर्कटिक, इट इज आर्कटिक लैटिट्यूड। आर्कटिक सर्कल्स बोलते हैं इनको, ये आर्कटिक सर्कल कहलाता है। एंड दैट in this side 23 1.5 degree south is tropic of Capricorn, tropic of Capricorn, ठीक है। और ये 66 1.5 degree south is Antarctic circle. So these are first, second, third, fourth and fifth. These 5 are the five main parallels of latitudes. ये हमारे parallels of latitudes की main 5 parallels हैं, ठीक है। And the last is heat zone. The last is heat zone. इसको समझने के लिए हम फिर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। These all are heat zones. इसमें भी देखिए, firstly these are poles, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेटर। अब हीट जोन में देखिए जो हमारा, ये मैंने आपको जो यहाँ पर ये वाला जो सर्कल दिखाया था 66 वाला, इसको हम यहाँ पे फिर ड्रॉ करेंगे। और जो ये हमारा ये दोनों पोर्शन हमारे हैं, ये दैट इज द फ्रिजिड जोन, और ये भी हमारा फ्रिजिड जोन में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाई थी, और यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाई थी, तो जो हमारे इक्वेटर का ऊपर और नीचे का पोर्शन है दैट इज और दैट इज, दीज टू पोर्शन आर टॉरिड जोन्स, टॉरिड जोन्स, ठीक है। अब हमारे कौन से बच रहे हैं? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो दिस इज द टेम्परेट जोन, temperate zone, and this is also the temperate zone, temperate zone. So the heat zones are the 3. The first is torrid zone, the second is temperate zone, and the third is frigid zone, ठीक है। तो ये हमने देखे 4 डायग्राम से मैंने आपको हेमिस्फीयर और ग्रिड, 5 मेन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स ये क्लियर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, ये मैंने आपको डायग्राम पोर्शन भी बना दिया।
पीडीएफ में मैंने ये चारों आपको डायग्राम जो है ड्रॉ करने के लिए दिए हैं। आप प्लीज, मैंने आज आपको एक्सप्लेन भी किए हैं, बहुत इजीली बन जाएंगे, बट आप इनको बहुत ध्यान रखना है कि आपको ये सारे जितने भी इसमें जो है ये हमने इंडिकेट किया है, ये आपको जरूर उसमें इंडिकेट करना है ताकि आपको हमेशा से ध्यान रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपकी छुट्टियां हो रही है 10 से 25 तक, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 25 ऑफ द जून को आपको मिलेगा। थैंक यू।